Assalamu alaikum, students. Today we will start a new topic: direct and inverse proportion. Okay, direct and inverse proportion is basically a very easy topic. Okay, direct and inverse, or sometimes we can say that direct and indirect proportion. Right? What is the meaning of the direct proportion? सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है. ठीक है बेटा. तो चलें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में कि बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है. सही है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज, if one quantity increase the other quantity will be increase. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट proportion, right? Direct proportion. What is the meaning? Direct proportion means if one quantity will increase, okay, the other quantity will increase. Okay, right? If one quantity will increase, will decrease, the other quantity will decrease. Is it clear? If one quantity increase, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल वे में आजकल के हिसाब से बात करते हैं, पेट्रोल के ऊपर बात करते हैं, तो बेटा पेट्रोल के प्राइस आजकल के इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है. जब पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो 660 सीसी या 1000 से जो नीचे जो गाड़ीज हैं, जो कार्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 660 सीसी, 800 सीसी, इनके प्राइस जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. क्यों इंक्रीज हो जाएंगे बेटा? क्योंकि देखें अगर आप पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अब जो है वो 660 सीसी गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है वो पेट्रोल भी जो है वो कम यूज करेगी. जब पेट्रोल कम यूज करेगी तो जाहिर सी बात है जो है वो फ्यूल एफिशिएंट है, तो जाहिर सी बात है उसके प्राइस भी क्या हो जाएंगे? खुद ब खुद जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे. सो इट इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इज इट क्लियर? ठीक है. तो अगर मैंने आपसे क्या बताया कि बेटा पेट्रोल प्राइस increase, okay, right, the cars, ठीक है, below 1000 cc will increase. Okay, the price of, right, we can say that the price of cars below 1000 cc will increase. Is it clear? Right? अब इसी तरीके से अगर बेटा अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन, सही है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए बेटा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की मतलब क्या है कि इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज, इफ वन क्वांटिटी will increase, if one quantity will increase, the other quantity will decrease. Is it clear? Okay, for example अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी बेटा? इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात ये करता हूं कि if petrol price increases, if price of petrol will increase, okay, the price of cars, right, more than 1000 cc will decrease. Is it clear? So what is this? It is known as indirect proportion. Is it clear? Right?
अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी साथ के साथ समझाता हूं कि बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ y varies as x, or in other words we can say that y is directly proportional to x, to that y is directly proportional to x, right? If y is proportional to x, is it clear? If y is proportional to, if y is proportional टू एक्स, बेटा देखिए ये जो सारी बातें हैं ना, ये सब के सब ये एक ही चीज है। ये किसको शो करती हैं? ये शो करती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसको शो करती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। So we can write this y is directly proportional to x. Y, when we remove the directly proportional side, we will use is equal to, and the constant, what is the constant? The constant is kx. Is it clear? For example, in the question, if it is given that x is equal to 4 and y is equal to 8, so first we will find the value of k. Y is equal to kx, y is equal to k, and x is equal to 4. So what is the value? 4 to the 8. Okay, so you can write this y is equal to 2x. What is this? ये जो आपका एक्सप्रेशन बन के आया है, अब इस एक्सप्रेशन के डिफरेंट नेम्स होते हैं। y in terms of x, is it clear? An equation connecting y and x, law connecting y and x, is it clear? तो बेटा ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही सेम चीज अगर आपको इनवर्स में मिल जाए तो इनवर्स में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ y is inversely proportional, if y is inversely proportional to x square, या x जो भी कह लें, चलें, y is inversely proportional to x. So what is the statement? Y is inversely proportional means जब भी inversely proportional होगा so you will write this 1 upon, and when we remove the proportional sign we will use is equal to and the constant. So what is this? Y is equal to, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू कैन राइट दिस k इज इक्वल टू yx। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, राइट? फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, इफ y is equal to 4 and x is equal to 2, then y is equal to k upon x, y is equal to 4 and x is equal to 2. What is the value of k? The value of k is 8. Now y, what is the expression? The expression is y is equal to 8 upon x. Is it clear बेटा? तो ये जो चीज है ये आपका क्या कहलाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या चीज सीखी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज then other quantity will increase, right? Or if one quantity will decrease then the other quantity will decrease. It is known as the directly proportional, right? Inversely proportional means if one quantity, what is the meaning of the inverse indirect proportion here? Inverse proportion, if one quantity will increase the other quantity will decrease as, and vice versa, right? तो बेटा ये आपका कहलाता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आता है कि इफ y वेरीज एज x,
if y is directly proportional to x, if y is proportional to x, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की हैं, राइट। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप कैसे शो करते हैं, y is directly proportional to x, y is equal to kx, if x is equal to 4 and y is equal to 8, y is equal to y is equal to kx. In place of y we will substitute 8, in place of x we will write 4. So what is the value of k? The value of k is equal to 2. Okay, now put the value of k in this equation. So y is equal to 2x. What is this? It is known as y in terms of x, an equation, iske different names hain, y in terms of x, or an equation connecting y and xy, y and x, and the third name is law connecting between y and x, राइट। इसी तरीके से बेटा अगर यहां मैं ये बात कहता हूं कि इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो सर तो इसको किस तरह से करेंगे, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x मींस y इज डायरेक्टली y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। इनवर्सली में क्या होता है, 1 अपॉन x, ठीक है। इसी तरीके से जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, सो वी विल यूज द is equal to sign as a constant, y is equal to k upon x and k is equal to yx. Suppose that if y is equal to 4 and x is equal to 2, right, we will find the value of k. In place of y we will substitute 4 and the value of x is 2, so cross multiply, k is equal to 8, right. So what is the value of this y, what the y is equal to 8 upon x. Is it clear? So बेटा अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बहुत सारी चीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल y is directly proportional to x square, y is directly proportional to x cube, right, y is directly proportional to the square root of x, right। इसी तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में फॉर एग्जांपल y is directly proportional to y is inversely proportional to square root of x, y is inversely proportional to x minus 2, y is inversely proportional to cube root of x and something, ठीक है। तो बेटा अब हम इसके पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे और फिर जो है वो आगे इसको देखते हैं, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? द क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, right। Now you have to read the question carefully, right। What is the question? Y is directly proportional to square of x, y is directly proportional to square of x, y is equal to kx square. Is it clear? Given that y is equal to 2 when x is equal to 4, right, from is this x and y, we will find the value of k. What is the value of y? The value of y is 2. What is the value of x? The value of x is 4, right? Now what will be the next step? Is equal to k. What is the value of square of 4? It will be equal to 16. What is the value of k? 2 upon 16. When we will further simplify, so what is the answer? It will be equal to 1 by 8. ओके, देखिए बेटा अब जब हमने k की वैल्यू निकाल ली है, सो इट मींस वी विल राइट इन इक्वेशन 1 y is equal to 1 upon 8x square. What is this? It is a general expression in terms of y and x, right? Second part is given that find y when x is equal to 10. Okay, find y when x is equal to 10. So what will you do? Y is equal to 1 upon 8. In place of x you will write 10, right? That square of 10, it will be equal to 100 upon 8. Okay, when we will further simplify, 2 5 0 and 2 4 and 2 2 are 4, 2 5 are and 2 2 are. So what is the value of y? The value of y is 25 upon 2 and it is your answer, right? तो ये तो पहला क्वेश्चन जो था वो आपका था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट y is inversely proportional to x. Y is inversely proportional to x. The table shows some values of x and y. Okay, the first part is given, find p. बेटा इस पार्ट p को मालूम करने से पहले हमें ये चीजें चेक करनी है
कि हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज गिवन दैट y is inversely proportional to x, it means y is equal to k upon x। बेटा अब अगर मैं इस टेबल के ऊपर गौर करूं, द फर्स्ट इज गिवन, द फर्स्ट x is 3 एंड द सेकंड y is 20, राइट। सेकंड में सेकंड कॉलम में 4 गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, राइट। और थर्ड कॉलम में x is not given and the y is given and the fourth column is n and you have to find out, right। तो बेटा देखिए सबसे पहला पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p के मालूम करने के लिए हमें एक जनरल फॉर्म चाहिए और जनरल फॉर्म जो है वो विदाउट के होना चाहिए। तो बेटा हम सबसे पहले हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे कि हम इस 3 और 20 को यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सही है। what is the value of y? Value of y is 20. What is the value of x? The value of x is 3. Okay, cross multiply. What is the value of this? 20 multiplied by 3, it will be equal to 60, right। तो बेटा देखिए जब मैंने 60 की वैल्यू निकाल ली है, so you can write this y is equal to 60 upon x। Is it clear? y is equal to 60 upon x। बेटा देखें अब अगर मुझे बेसिकली जो मेरा जो क्वेश्चन था वो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। व्हाट इज p? इट मींस कि जहां भी y आ रहा है यू विल सब्स्टिट्यूट p। मैंने रखा p and what is the value of x? The value of x is 4, right। Now you can further simplify, 4 1s are 4, 4 5s are 20। What is the value of p? The value of p is 20, right। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपका पहला पार्ट है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? द वैल्यू ऑफ p is 15। इट इज योर आंसर, राइट। सेकंड पार्ट इज गिवन, you have to find the value of q, but we will use this expression। what is the expression? The expression is given that y is equal to 60 upon x। okay, now you have to find the value of you have to find the value of p। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? p की वैल्यू चाहिए, सॉरी आपको किसकी वैल्यू चाहिए? q की वैल्यू चाहिए। so we will use the second column, in place of x you will substitute k or in place of y you will substitute 5। so y is equal to 5, 60 upon q। Is it clear beta? Now 5q is equal to 60। beta what is the value of q? 60 upon 5। so beta what is the value of q? q it will be equal to 12। ठीक है बेटा। तो ये चीजें हैं जो कि हमें फाइंड आउट करनी है इस तरह से। इसी तरीके से बेटा पार्ट सी इज गिवन दैट express m in terms of n, right। what is the expression? in part 1 we have done this, y is equal to 60 upon x। now we will check the table, or in third column, sorry in fourth column, in place of x you will substitute n, or in place of y we will substitute m, right। n m n means in place of x you will write n, okay, is equal to, in place of m is 6, right। in place of y we will substitute m। is it clear? बेटा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि m in terms of n, तो बेटा what is this? it will be equal to m is equal to 60 upon n। ये एक और भी चीज यूज कर सकता था, वो ये कह सकता था कि m as the subject of the formula। तो बेटा चीज एक ही है, m as the subject of the formula या m in terms of n, both are same। is it clear? तो बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। what is question number 3? the question number 3 is given that y is inversely proportional to square of x, right। y is inversely proportional to square of x। is it clear? मैंने लिख दिया, when we remove the proportional sign we will use is equal to n x square। what is the value of k y x square? is it clear? first step बेटा हम क्या करेंगे, given that y is equal to 2 when x is equal to 6, so ये क्या आ जाएगा k, and what is the value of y? the value of y is 2, the value of x is 6। बेटा what is the square of 6? the square of 6 is 36 and 36 multiplied by 2 it will be equal to
72. So beta, what is this? Y is equal to 72. What is this in, right? Y is equal to 72 upon x square. Is it clear? So what is this? It is known as the expression in terms of x, right? Second part is given that find the value of y when x is equal to 2. Find the value of y when x is equal to 2. So what will you do? In place of x, we will write 2. What is the square of 2? Square of 2, it will be equal to 4. Okay. Now 4 ones are 4, 4 eights are 32. So what is the value of y? It will be equal to 18. Now it is your आंसर, राइट? ठीक है बेटा, इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि बेटा देखें यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, राइट? देन द क्वेश्चन इज गिवन दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. y is inversely proportional to x means 1 upon x, and y is equal to k upon x. What is this? K is equal to xy. Is it clear? So first step you will find, what is this? It is equation 1. First step we will find the value of k. For the value of k, x is 20 and y is 1 upon 5. So when you will cancel out, so what is the value of this? K is equal to 4. If k is equal to 4, now input y is equal to k is 4 upon x. Now, what is the equation? Y is equal to 4 upon x. Is it clear? बेटा अब यहाँ पर कह रहा है कि find y. Now you have to find the value of y when x is equal to 1 upon 7, right? So in above equation, we will write in place of x 1 upon 7, right? देखिए बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? What is this? It will be equal to 4 divided by 1 upon 7. Okay, when we will remove the divide sign, so the right term will be reciprocal, means 7 multiplied by 4. So beta, what is the value? 7 4s are 28. So beta, what is this? It is the value of y. ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर है जो आपने कैलकुलेट किया, राइट? सो जस्ट अ मिनट बेटा। राइट बेटा, चलें अब आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पर क्वेश्चंस में क्वेश्चन यहाँ पर आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन क्या है, देखें यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही सब चीजें लिखी हुई है बेटा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x। तो इट मींस यू कैन राइट दिस, y is directly proportional to square of x. Y is equal to kx square, right? Now first you will find the value of k. Okay, for the value of k we will use this. What is the value of y? Is 32. And what is the value of x? The value of x is 4, right? What is the square of 4? Square of 4, it will be equal to 16 and it will be equal to 32. What is the value of this? It will be equal to 2. बेटा अगर आपके पास k की वैल्यू आ गई है, so what is this? It is the equation number 1. Put the value of k in equation number 1. So what is the answer? Y is equal to kx square. बेटा देखें, अगर जब मेरे पास y is equal to kx square है, so you can write this. What is the, now find y when x is equal to 3. So in place of x you will substitute this. Y is equal to 3 to the power 2 is 9 and 9 2s are 18 and it is your answer, right? ठीक है बेटा, इन सब चीजों पे जरा सा आपको खुद से गौर करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि r is directly proportional to the cube of p. r is directly proportional to the cube of p. When we remove the directly proportional sign, r is equal to kp cube, right? What is the, when p is equal to 2, r is equal to 24, r is equal to 24, the value of p is equal to 3. 2 to the power 3 is 8,
Okay, and what is this? What 8 3s are 24? What is the value? Take it 3. Now the value of k in equation 1, r is equal to 3pq. इज इट क्लियर? तो बेटा अब मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहला पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर आर इन टर्म्स ऑफ पी। तो द फॉर्मूला ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ पी, इट मींस यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के। इफ यू विल नॉट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू तो वो मार्क्स आपको नहीं देंगे। ठीक है बेटा, इसका दूसरा नाम आपके पास क्या था, फॉर्मूला बिटवीन आर एंड पी, द लॉ कनेक्टिंग बिटवीन आर एंड पी, right equation connecting between r and p। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p when r is equal to 192। now you will use this formula, r is equal to 3p cube। what is r? r is given 192 is equal to 3p cube। is it clear beta? right, 3 3 nines are 18 and 3 fours are 3 nines are 18 and 3 fours are 12। is it clear बेटा? अच्छा अब देखिए यहाँ पर 192 and what is the value of k। जस्ट अ मिनट, हम इसको चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। r और the value of p is 2 to the power 3, 8 3s are 24 and something, r is equal to 3p cube। what उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा कि find the value of p when r is equal to 192। right, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन r इज इक्वल टू 192। अच्छा अब एक चीज यहाँ पर मैं गौर कर लूं, क्यूब ऑफ p, यस यू आर राइट। ठीक है, अच्छा r इज इक्वल टू 3p क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r इज गिवन दैट 192। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखिए बेटा यहाँ पर 192 डिवाइडेड बाय 3, बेटा ये पेपर 1 का क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है यू विल नॉट यूज द कैलकुलेटर। 3 यहाँ पर आ जाएगा 3 6 are 18, right, and 3 4s are, right, 3 4s are 12। so I think it is a mistake now, I will correct it, right? so it will be equal to 64 is equal to p cube, right? now you have to find the value of p, right, but here is cube। so what will you do? Cube root on both sides, cube root on both sides is cube and cube root will be cancelled out, right? It will be equal to p। and what is the cube root of 64? so 64 means 4 ones are 4, 4 fours are 16, 4 fours are 16 and 4 ones are 4। so बेटा आप क्यूब रूट में कितने का पेयर बनेगा? क्यूब रूट में हमेशा 3 का पेयर बनता है, सही है। तो 1 3 1 4 will be outside। so what is the answer? the value of p is equal to 4, right? तो बेटा ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे अब तकरीबन जो है वो सेम आ रहे हैं। तो इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है कि सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे। तो बेटा ये देखिए, ये आई थिंक इट इज वेरी इजी टॉपिक, और मेरे समझाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि मैं आपको एक चीज को लेके चल सकूं, राइट? देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ अ, क्वेश्चन नंबर 10, the cost of a mirror is directly proportional to the square of its width, right? the cost of a mirror, right, we can say that m mirror means m, and the square of its width, so it means m is directly proportional to w square, right? a mirror of width is given 40 and the cost is 24, so m is equal to kw square। what is m? m is given, m is 40, m is 40, or sorry, width is 40, sorry, so yeah, width is 40। it means you can write this 40 square, and what is the m? m is given 24, right? अच्छा अब देखिए यहाँ पर मिरर को हमने कॉस्ट वो ले लिया, कोई इशू तो नहीं है ना। 24 is equal to k। what is the square of 14? the square of 14, it will be equal to 1600। so what is this beta? 24 upon 1600, right? 8 3s are 24, 8 2s are 16, so what is the value of k? k is equal to 3 upon 200।
बेटा देखें, अब हमारे पास अगर ये यहाँ पर k की वैल्यू आ गई है, तो अब हम इसको किस में रखेंगे? जी बेटा, अब हम इसको रखेंगे किस में? एक फर्स्ट फॉर्म में। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म? द फर्स्ट आपके पास इक्वेशन हमारे पास ये थी, वो क्या है? m इज इक्वल टू, यस बेटा, m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ w स्क्वायर, right? What is the value of k? K is 3 upon 200 w square, right? अच्छा देखिए, उसके बाद ये कह रहा है कि राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ अ मिरर। वैसे अगर लिखना चाहता तो मैं कॉस्ट c लिख सकता था, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w स्क्वायर, बट मैंने इसको मिरर के उससे शो कर दिया, कॉस्ट ऑफ मिरर, राइट? नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द cost of a mirror, right, when the width is 600. So what will you do beta? Get 3 upon 200 and the w is given 60 square. What is the square of 60? A square of 60 means 3600, right? 20 and 20 will be cancelled out, and 2 ones are 2, 2 eights are 16. What is the value? The cost of a mirror, it will be equal to dollar 15, right? $54, it is your answer, right? So बेटा देखें, ये एक वेरी इजी, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, और इसमें आपको खुद से देखना है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, यस, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, सही है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा है समझने का। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इज v मीटर पर सेकंड एंड इट्स ब्रेकिंग डिस्टेंस इज d मीटर, d is directly proportional to square of v, so d is equal to kv square, right? Next is given that when the speed of the car is 8 meter per second, the braking distance is 5 meter. Right? When the speed of the car means v, and the distance is given 5, and k or v, what is v? V is given 8 square. Right? What is the value of k? 5 upon 64. Basically, what is the square of 8? Square of 8 is 64, and 64 is multiply after is equal to the divide. So what is the answer beta? K is equal to 5 upon 64. Now put in equation 1, right? What is the equation 1? The equation 1 is given that d is equal to 5 upon 64 into v square, right? तो देखें बेटा, यहाँ पर मैंने इसको d को तो मैंने निकाल लिया, राइट बेटा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि फॉर्मूला कह रहा है, देखिए यहाँ पर दो चीजें पूछ रहा है, डी, तो यू विल राइट दिस 5 अपॉन 64 into v square, right? Second part is given that find the braking distance when the speed of the car is 40 meter per second. बेटा देखें, अब मुझे d कैलकुलेट करना है, d is equal to 5 upon 64 into v square, and what is the speed? Speed means v is given 40 meter per second, so 40 is square, right? So beta, what is this? 5 upon 64 multiplied by 40, square का मतलब क्या होता है? 40 multiplied by 40. So you can write this 4 ones are 4, 4 6 are 24, and 4 tens are 40. 4 fours are 16, and 4 tens are 40. Again you can cancel out, 2 twos are 4, 2 fives are 10, again 2 fives are 10. So beta, 5 multiplied by 5 multiplied by 5, so what is the answer? It will be equal to 125. So braking distance, it will be equal to 125. So बेटा ये जो था d, यहाँ पर d जो है वो 3 times बच रहा था, 5 into 5 into 5 into 5. So बेटा what is this? It will be equal to 125 Newton, right? ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि बहुत आसान है क्वेश्चन, इसमें अल्लाह का आपको कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है? देखें, सारे क्वेश्चंस का जो मेथड है वो तकरीबन जो है वो क्या है, सेम चल रहा है, और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। ये आई थिंक टोटल कोई क्वेश्चंस का मुझे ऐसे कोई याद नहीं है कि कितने क्वेश्चंस हैं, लेकिन तकरीबन जो है वो ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं उनका मेथड क्या है, सेम है। देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन जो है वो आया है। क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x, y is directly proportional to the square of x, y is equal to kx square, right? Y is equal to 8. Now what is the question? Given that y is equal to 8 when x is equal to 4, y is equal to 8 and x is equal to 4, right?
So what is the square of 4? A square of 4, it will be equal to 16. What is the value of k? 8 upon 16, right? Or when you will further simplify, so what is the answer? It will be equal to 1 upon 2. सही है. देखें, अगर जब मैंने k की वैल्यू निकाल ली तो बेटा अब आप यहाँ पर रख लीजिएगा y is equal to kx square means y is equal to 1 upon 2 of x square, right? So you can write this y is equal to 1 upon 2 x square. ठीक है बेटा. देखें यहाँ पर पहली जो चीज थी वो ये थी. सेकंड पार्ट ये गिवन है कि फाइंड y on x is equal to 3. बेटा देखें जब आपको x is equal to 3 फाइंड आउट करना है, right, तो you will use this you will use the above expression. What is this? It will be equal to 1 upon 2 x square, right? So what is x is given 3, and the what is the square of x? The square of square of 3 is 9. So what is the value of y? The value of y is 9 upon 2, right? Now we will move the part b. Part b is given that y is inversely proportional to q. P is inversely proportional to q. It means you can write this p is inversely proportional to q, and when we will remove the directly proportional sign, we will use the is equal to and the constant k. So what is this? P is equal to k upon q. Is it clear? Now, second line is given that it is known that P is equal to 15 for the particular value of Q, right? P is equal to 15. Now, in place of P, we will write 15 is equal to Q, right? We will find the value of K. What is the value of, we will find the value of Q. So what is the value of Q? The value of Q, it will be equal to K upon 15. Is it clear? Now the value of Q is equal to K upon 15 when P is equal to 15. Right? Now the question is given that write down the value of P. P की value चाहिए when the value of Q is doubled. Why? Now you have to find write down the value of P when this value of Q is double. अब अगर ये जो value of Q है डबल का दूसरा नाम आपके पास क्या हो सकता है? ट्वाइस. क्या हो सकता है बेटा? ट्वाइस. ठीक है, तो कीप इन माइंड डबल का दूसरा नाम हम क्या यूज करते हैं? ट्वाइस, राइट? ये 2 times. So what is this? It is saying that write down the value of P when this value of Q is double. If the value of Q is double, it means 2 times of K upon 15, right? Now use this value. Now use this value in equation 1. So beta, what is this? P is equal to K, right? Or in place of Q, you will write this 2K upon 15. Is it clear? So you can write this 15 divided by 2K upon 15. So when we will remove the divide sign, we will use the multiply sign, and the right term will be the reciprocal, right? K and K will be cancelled out. So beta, what is the value of P? The value of P is equal to 15 upon 2. Is it clear? I think it is very easy question, but simple is that you have to find first, you will find the value of Q. If you will not find the value of Q, you cannot calculate the value of P easily, right? So बेटा देखें यहाँ ये क्वेश्चन तो मेरे यहाँ तक के बहुत आसान थे, जो कि मैंने यहाँ तक के कर दिए. सही है. अच्छा, अब आगे देखते हैं. यहाँ लास्ट के क्वेश्चंस में मैं कुछ देख लेता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि जिसमें आप लोगों को मसला हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, in October, November 19, question number 28 is given that y is inversely proportional to x. Y is inversely proportional to x, and y is equal to k upon x, right? In this question, the question is given that x is equal to 2, y is equal to t. So in place of y, we will t, and in place of x, you will write t. So what is the value of k in terms of p is given 2t? Is it clear? Now put in equation number 1. So what is the equation number 1? The equation number 1 is given that y is equal to, in place of k, you will write 2t, or
what is x? What is x? X is x, right? What is the expression? The expression is given that y is equal to 2t upon x, right? Now the second part is given that find an expression for y in terms of t when x is equal to 3. Now if x is equal to 3, so you can write this y is equal to 2t upon 3, right? That is the answer. Okay, so because the question is given that find an expression y in terms of t, so बेटा मैंने इसी को x in terms of t आपका जो है वो कैलकुलेट किया है, जो मैंने आपको करा दिया, राइट? सो बेटा ये था मेरा अक्टूबर नवंबर 19 का क्वेश्चन, और ये सारी चीजें, तो यही चीजें सेम चीज यहाँ पर भी आ रही हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 26. Question number 26 is given that y is inversely proportional to the square of x. Now it is the May June 19 paper 1-2. You will not use a calculator. Y is inversely proportional to the square of x. So y is inversely proportional to the square of x, right? Y is equal to k upon x square, right? K is equal to y x square. Is it clear? Now the question is given that k when x is equal to 4 and y is equal to 10, right? So first you will find the value of k. What is the value of y? The value of y is 10, the value of x is 4. What if the value of x is 4, so what is this? It will be equal to k, the square of 4 is 16, 16 multiplied by 10, it will be equal to 160. So here, what is the value of this? The value of k is 160 upon x square. Yes, right? तो बेटा देखें यहाँ पर हमने एक चीज को निकाल लिया है कि y in terms of x, because the question is given that y is inversely proportional to the square of x, right? So inversely proportional and it is a square, right? So y is equal to k upon x square and k is equal to y x square, right? First we will find the value of y. Now the value of x and y is given. X is equal to 4 and y is equal to 10. The square of 4 is 16 and this 10 multiplied by 10, it will be equal to 160, right? Put in equation 1, right? What is 1? Now it is equation 1. You can write this, put in equation 1. So y is equal to 160 upon x square. Right now, the next part is given that find the value of y when x is equal to 100, right? So it means 160 and in place of x you will write 10. So beta, what is the answer? It will be equal to 160 upon 100. Okay, 10 and 10 will be cancelled. 2 8 is 16, 2 5 is 10. So what is the value of y? 8 upon 5. Correct? Okay, now what is the question? The question is given that describe the effect of y. Describe the effect of y when x is half. What is the value of y when describe the effect of y when x is half? What is the expression? The expression is given that 160 upon 160 upon x square. What is the value of y when x is half? For example, if x is half, what is the value of x? The x is x, and what is the half? Half means x upon 2. So what will you do? In place of x, you will write x upon 2 whole square, right? So 160, and what is this? It will be equal to x square upon 4. 160 divided by x square upon 4. When you will when we will remove the divide sign, we will use the multiply sign, and the right term will be the reciprocal. So what is the answer, beta? The answer, it will be equal to 240 upon x square. Is it clear? तो बेटा ये तो हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 26, राइट? अच्छा, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो सारे के सारे तकरीबन क्या है, सेम है, और मेरा ख्याल कि इसमें किसी को कोई इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो था तकरीबन जो है वो सारे क्वेश्चंस का जो है वो मेथड क्या है, सेम है, ठीक है बेटा? आज हम इस टॉपिक को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और उम्मीद है कि ये तकरीबन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपसे हो जाएंगे, राइट? ओके बेटा, टेक केयर, इंशाल्लाह ताला. तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, राइट? टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज.